अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूंकि अच्छे पढ़ान सी प्रोग्रामिंग पतमिस वीडियो वो कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग क्या फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स इन सी वो आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड्स इन सी अजकिस वीडियोस में वो कि करो डिस्कस कि डेटा टाइप्स इन सी तो अजकिस वीडियोस में वो डाटा टाइप क्या गो नीड ऑफ डाटा टाइप क्या पढ़ान तो सोन सी यह कत्या किस्म डेटा टाइप सपोर्ट करान। सो अजुक टॉपिक डाटा टाइप्स इन सी। डाटा टाइप क्या गो असली डेटा टाइप्स कत वन डेटा टाइप चूंकि यम सात वेरिएबल ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल पर तन वो मे यम सात वेरिएबल डिक्लेयर करान तमिक सिंटैक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन सोन मे सह टाइप डाटा टाइप क्या डाटा टाइप नेम ऑफ वेरिएबल या वेरिएबल नेम ऑफ वेरिएबल एंड सेमीकोलन यह सिंटैक्स वेरिएबल डिक्लेरेशन वेरिएबल डिक्लेयर कर पत्मिस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कोर तो एग्जांपल अगर निमो फॉर एग्जांपल इंट ए एंड ऑफ स्टेटमेंट यह क्या मकसद क्या यह मकसद कि वेरिएबल करान डिक्लेयर इन द कंप्यूटर मेमोरी अगर सी कंप्यूटर मेमोरी फॉर एग्जांपल तो अत जाय डिक्लेयर करान ऑफ टाइप इंटीजर यह जाय अत नाव ए ऑलरेडी डिस्कस कोर प्रेनिस वेरिएबल वीडियोस में तो ये चूंकि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल यह वन कंपायरस कि मानी खतर कर जाय कर अंदर कन रिजर्व कर मानी खतर स्पेस मेमोरी मज ये नाव ए ये मे डाटा स्टोर कर इंटीजर टाइप दैट मीन्स ये हेको इनिशियलाइज ए इक्वल टू 15 दैट मीन्स ये वैल्यू सह 15 गो यह डेटा टाइप ये तुरा फिक्र डाटा टाइप it tells the computer what type of data the user are going to store in the computer memory in the variable. What type of data? Go by this data type the compiler knows what type of data is going to store in the variable. कमी किस्मुक डाटा यहान यूजर स्टोर कर अगर जाय दिवान स्पेस एलोकेट करान तो अत कम टाइपुक कम तरीकुक डाटा अमिस स्टोर कर इन एडवांस लगन पता कम यम डाटा टाइप so accordingly the space has been allocated to this data type by the memory manager. Accordingly as per the data type the space is going to be allocated. Ami data type मुताबिक memory manager सह memory करा allocate data type and variable खतर. Okay go ये मनो कि data type in order to allocate the memory to the variables क्या करान चीज लिखान लिखान कंप्यूटरस पे प्रोग्राम लिखान लिखान तम मेमोरी में स्पेस रटान जाय रटान तो स कंप्यूटर मेमोरी दैट इज अ प्रेशियस कॉस्टली मेमोरी सुई सॉफ्टवेयर सुई प्रोग्राम मान बेस्ट सॉफ्टवेयर युस मिनिमम मेमोरी कर यूटिलाइज तो ये प्रोसेसिंग स्पीड असल स्पीड असल सु एल्गोरिथम मान बेस्ट एल्गोरिथम कंसिडर कर गो इस मेमोरी यम सात प्रोग्रामर प्रोग्राम बनान मेन कंसिडरेशन मेमोरी क्या कम से कम मेमोरी यूटिलाइज गि कॉस्टली सो डाटा टाइप वन व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एंड अकॉर्डिंगली एज पर दैट डाटा टाइप द मेमोरी हैज टू बी एलोकेटेड टू दैट वेरिएबल तो तम हिसाब तमिस प्रोग्रामरस तमिस वेरिएबलस यह मेमोरी एलोकेट कर तो ये तुर फिक्र कि डाटा टाइप is a representation of the data in the computer memory. यह रिप्रेजेंट करान डाटा कंप्यूटरस मज वेरिएबलस में कित रिप्रेजेंट ग मेमोरी में कित रिप्रेजेंट गसान डाटा दैट इज गोइंग टू टेल बाय दिस डाटा टाइप. सो डाटा टाइप यह वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये प्रोग्राम बनावन कह लैंग्वेज गोडनेथ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अमिस डाटा टाइपस पता. ओके तो यह गई नीड ऑफ द डाटा टाइप क्या पेवान तिकाज डाटा टाइप सह लगान पता कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी गस कहें तो शॉर्टेज ऑफ मेमोरी पे कहें यी मेमोरी में जरूरत इंट खुद यु इंटीजर रटान मेमोरी स्पेस रटान ती हम बह
तम अलावा हम क्या ताकि गस पत वेस्टेज ऑफ मेमोरी सह लॉस ऑफ मेमोरी या मे कर सह मेमोरी जरूरत यस मे कत कम गछ गो अब सह दोशे वेस्टेज एज वेल शॉर्टेज ऑफ मेमोरी दोशे छ प्रिवेंट गछान ओके तो data types in C so far as C is concerned the data types of C are broadly classified into three main categories three qism category छ we say C data type three different category in broadly classified they are hope के data type आ समझ आएगा यम three category छ तिम छ गोडनथि छ fundamental data type आप मुझे वन क्या fundamental data type या वन तवा primitive data type primitive data type या है कुछ नाम डाल दी थी built-in data type कोई फंडामेंटल तो ती प्रिमिटिव तो क्या गई बिल्ट इन तो दीन कैटेगरी से सच डिराइव्ड डेटा टाइप तो ये स्ट्रीम कैटेगरी आमित छे सच यूजर डिफाइंड डेटा टाइप broadly the data types in C are classified into three categories, three main categories. They are the fundamental data type, derived data type, and user-defined data type. The fundamental data type is tasmuz kuch yuan tasmuz further anikem part yuan asmuz such yuan tasmuz integer belongs to further the fundamental data type are divided into following subcategories: integer, character, float, double, and void. These five different data types belongs to this fundamental data type. The fundamental data types are subdivided into integer, character, float, double, and void data types. So built-in data is non-fundamental data type which are already defined in the compiler. When you see compiler which already आपने define करी तो ये चीज़ बनाने की ज़रूरत की है. तो then this category है such a derived data type. As the name suggests, they have been derived from these fundamental data types. These types of data types, derived data types, which derive आमित करने by using these, which हम बनाने by using these data types, a combination of these data types. Fundamental data types. Example is arrays of one. Array is the example of their derived data types. String is also example of their string is also example of their derived data types. Pointer is also example of their derived data types. They belong to this derived data type, and functions are also example of their derived data types. Go yetan toras chikri this derived data types and subcategories array, string, pointer, and functions. तो user defined data types should user defined data types यम पढ़ोस अलग videos and further बनाओस user defined data types यम user as per need पन्ने need मुताबिक पाने define बनावन छु तिमन से सोना user defined data types. तो C language ये कुछ user defined data type support करान छे इसे करान support structure. Structure is a user-defined data type. Union is also a user-defined data type. Type def is also a user-defined data type. And enumerated data type is also a user-defined data types. These are the examples. These are the different categories of the data types supported by the C language. ये support करान से C language. Fundamental data types का example था कुछ integer E1, character E1, float E1, double E1 to void E1. तो derived data types should be all कमी category. जब array E1 से string E1 से pointer E1 से functions E1 से. तो user defined data type should be all कमी major category या हमें structure से E1, union E1, type def E1 से enum E1 से. क्योंकि non derived data type
यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यम पढ़ो अलग वीडियो में तो आज कर कोशिश कि नम इंटीजर कैरेक्टर यानी बिल्ड इन डेटा टाइप एक्सप्लेन करने डिस्कस करने ओके सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गोडू डेटा टाइप सह इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर एज द नेम सजेस्ट्स इंटीजर इंटीजर डेटा टाइप्स के तिम डाटा टाइप्स यथ स्टोर करो इंट टाइप integer type that means numbers 0 1 2 3 4 0 1 5 8 5 8 5 5 4 2 5 2 these are the integer data types where we are going to store the integers -1 -2 -35 plus minus negative numbers as well as positive numbers but only the numbers, not a floating point, without decimal numbers. Integers yat mudis store chakan kir timan numbers timan data type and integers. What are integer? Integers are that type of data type where we are going to store the integers. That means 0, 1, 2, 3, -5, -18, -20. The yim number if mudis add store hako kir to timan data type and ta data type and integer. चूंकि इंटीजर करान we are going to denote integers by int keyword keywords for a special meaning for any programming language. We cannot use keywords as a variable names or a function names. Variable name या function name इस्तेमाल करते क्या कम keyword as identifier है कौन सा इस्तेमाल करते या से ये कीवर्ड्स किया तो इस इंटीजर से डिनोट करा इंट से ट्रांस में आई टी कैपिटल एम टी कैपिटल टी टी कैपिटल कि ऑलरेडी वन यम ती कीवर्ड छे दे आर ऑल इन द लोअर केस लेटर्स यम छे अपर केस लेटर में आसान की है सो यू सी इंटीजर यू से हावन छे इंट से हाव या इंटीजर है हाव इंटीजर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू further divided into three categories, three subcategories. You see, integer are three subcategories. Actually, int, total int, int, integer. We have short int. So we have long int. Short int, long int, and further int, short int and long int. Integers are further divided into three subcategories: int, short int, long int. Depending upon the space they occupy. ये कुछ जायश अंतर रटाना int. Then on the basis of that they have been subdivided into three categories: int, short int and long int. What you say is integer chu. So far as C language is concerned, integer chu returns 0 and 4 byte of joy space. The integers occupy 2 or 4 bytes of space in the memory. Yem sar is quantity variable. For example, मैं पूरी इतना सी memory या computer memory मैं कोई variable int a. You see a अंदर की नसे जाय छे. मैं नि खतर कर इन a variable खतर कर memory manager जरन 0 or 4 byte, 0 4 byte joy current allocate for this int. 0 so depending upon the compiler, depending upon the machine, whether you should bit karan machine karan use, can you karan dietary bit use, depending upon that, depending upon the machine, the integers occupy the space of 2 or 4 bytes. Go adan machine हम उनसे जुबाइट करानी occupy तो adan allocate करा int खतर तो adan machine खतर करा ये 4 bytes of memory. allocate. क्योंकि अच्छा पता है इस बाइट आसान इस कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स आसान तो 2 बिट गई शुरा बाइट तो 4 बाइट गई शुरा 2 बाइट 2 बिट go is only yet is int should return actually 0 4 bytes. It can take 2 or 4 bytes of memory.
वो यम साथ int हो में int a युस मेमोरी मैनेजर तमको अमि खतर allocate या space करन a variable खतर से 2 या 4 से depending upon the machine अगर ये शुरा भी तेरे के 2 अगर 4 ते हेकस वो इस डिपेंड करा कि कुछ का मशीन छि architecture of the machine is पे डिपेंड करा so you see integer is further divided into subcategories yes is subcategory yes is subcategory bavan kya go yes is subcategories go further int is divided into two subcategories sub data types first is signed int unsigned int इथे कहीं signed short int the unsigned short int इथे कहीं signed long int इथे कहीं unsigned long int go the int is first integer data type divide करना गसान सब यानी category किंचा int short int to long int तो further int असम से कैसे signed int थी unsigned int थी short int कैसे signed int थी unsigned int थी long int कैसे signed int unsigned now it is when depending upon the space they occupy कुछ space और तक मुताबिक छु ये गसान divide into these three categories long int short int and long int तो युस ये signed int छु signed int छु करन 2r युस हम space occupy करन छु 2 or 4 bytes depending upon the compiler this time going 2 or 4 bytes तो इस short signed short int इस zubyte करन and size zubyte करन here occupy space अंदर के unsigned करन zubyte है तो long signed use int छु signed long इस 4 byte करन the unsigned long 4 byte करन go depending upon the size they occupy ये कुछ space अंदर occupy करन of int कुछ जाय छु रटन अगर मैं को फॉर एग्जांपल मैं हो बस unsigned short int a you can variable you see a छु I'm कर zubyte अगर मैं हो signed short int a and equal अगर मैं हो इतने फॉर एग्जांपल signed long int a you get 4 byte of memory का allocate memory manager I mean variable खतर वो it depends upon the declaration I'm क्या data type क्या छु क्या छु signed क्या फॉर एग्जांपल अगर मैं करूं 1 स्टोर या as में तो बे क्या कर अगर मैं करूं इतने फॉर 1 करूं मैं स्टोर बे क्या करने short int क्या z byte से अगर मैं int करूं अगर मैं 4 byte राइट गो 2 byte क्या बहक 1 गस में कम खत का मेमोरी मुझ एक्सी byte मुझ गस में 1 या सो या है कि मैं ये गछ क्या छत नाउ occupy ताप में बत तो बे क्या कर मैसेज एट मेमोरी सब बच्चा ने खतर से नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स कैटेगरीज हम गो दिस इज ऑल अबाउट द अगर साइलेंट int छु जिया 4 byte छु रखनी अनसाइलेंट है नॉट यूज short int का signed zubyte या unsigned zubyte long आसे int 4 byte तो यहाँ signed या unsigned मतलब क्या गो unsigned means गो इतना either positive or negative तो क्या जी मैं वो integer छकन से माइनस 3 गो integer 4 ते 0 ते -5 ते -80 ते +80 these are all the integers यम छ सारी integer गो signed unsigned signed means गो minus यम सब साइनस कट करन छ गो माइनस ते प्लस ते याक मजी वन छ यम सब बका unsigned कट by default unsigned means positive खाली positive numbers unsigned means positive numbers signed means both positive as well as negative okay if I can go signed short means both positive as well as negative unsigned means only positive numbers signed means positive and negative and unsigned means both positive as well as negative no positive only positive sorry the unsigned means both positive and negative you signed so this is all about the how many space the memory is going to be allocated by this int how many memory the integers takes go at different zya 4 magar agar ismo signed yot
तेल गो ये अगर साइन शॉर्ट हो तेल दुई गो इट डिपेंड्स अपन मे कूता डाटा स्टोर कर यूता मे डाटा स्टोर कर तम हिसाब कर पन डिक्लेयर वेरिएबल्स टाइप तम डिक्लेयर ओके तो ये मेमोरी बचान अम पे वो साइज आप बह कूता झूठ नंबर हेक बह कूता बोड़ नंबर हेक चाहे साइनड या अनसाइनड बह कूता झूठ नंबर हेक या बोड़ नंबर हेक अकिस इंटीजरस मन स्टोर कर फार्मूला बिल्कुल इजी मे वो इंटीजर जो बाइट 2 or 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी रटान 2 बाइट मीनस गई 16 बिट तो 4 बाइट्स गई 2 बिट ओके तो अत फार्मूला बिल्कुल इजी साइज काटने खतर ये साइज काड़ो कूता बोड़ नंबर हेको अत मज ये कर स्टोर कर बिल्कुल साइन गो अनसाइनड खतर अलग अनसाइनड मतलब गो पॉजिटिव इंटीजर्स खतर 0 क्या पॉजिटिव नंबर गसान स्टार्ट देन 0 हेर कुन तो 0 कंसिडर करने एज अ पॉजिटिव तम बोन कुन लेस देन 0 नंबर दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स तो 0 to फार्मूला 0 पे to 2 raised to power n minus 1 ये फार्मूला अगर याद हो तो प्रत कुन डाटा टाइप साइज पाने कर ओके किसके 0 to 0 पे to 2 n means total number of bits अकिस मज कूचा बिट चूंकि मे वो साइड 2 बिट कर इंटीजर 2 या 4 बाइट कर फॉर एग्जांपल इसका कंसिडर ये 2 बाइट कर 16 बिट मशीन तो अत मज 2 बाइट कर जाय ऑक्यूपाई दैट मीन्स 2 बाइट मीन्स गई 16 बिट क्या 8 बाइट 8 बिटन 2 बाइट गई 16 बिट दैट मीन्स 2 raised to power 16 2 raised to power 16 minus 1 ये करो सो 0 to 2 raised to 2 2 4 2 8 2 ये करो अंडरस्टैंड सह बनान 6 6 5 5 3 6 minus what you want go 65,536 minus 1 so go 0 to ये आठ पास so go 6 5 5 3 5 go this is a range यह रेंज तन हेक नंबर अत मज स्टोर कर 0 पे 65,535 तन हेक 2 बाइट ऑफ इंटीजर इंसान स्पेस कर अत मज एलोकेट अत मज हेक यूट झूठ नंबर हेक अत मज स्टोर This is size of the int, normal int is आसान छु अगर इथे कहीं वही आसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग int छु मैं वो लॉन्ग int करन 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी 4 बाइट्स गई 2 सुगर सोदी यतनस 2 raised to power 32 0 to 2 raised to power 32 minus 1 ये 2 raised to power 32 करो सो करो ये जरा ये माइनस करो 1 तो तक ऑटोमेटिकली a size of a long int तो इसके इंटरेस्ट कूता बोर्ड नंबर हेको इस असमज स्टोर गो दिस द फार्मूला प्रत कुन डाटा टाइप साइज काटने खतर जरूरी ये फार्मूला है मगर तम खतर खाली साइन अनसाइनड खतर अनसाइनड मतलब गो कि ये खाली पॉजिटिव नंबर्स आसान तो वो अगर मैं अनसाइनड खतर साइनड खतर साइज किस करो हाउ डू यू कैलकुलेट द साइज ऑफ द साइनड इंटीजर साइनड कैरेक्टर साइनड फ्लोट साइनड डबल प्रत कुन डेटा टाइप पे अप्लाई गसान तम खतर फार्मूला minus into 2 raised to power n minus 1 to 2 raised to power n minus 1 minus 1
which so go agar it has 2 bytes of memory karan 2 bytes so go 16 bit sure bit so go minus into 2 raised to power 16 minus 1 to 2 raised to power 16 minus 1 minus 1 so go 2 raised to power 15 to 2 raised to power shurahane after panda minus 1 so go minus into 2 raised to power 15 karo 2 2 are 4 2 are 8 2 are 16 2 are 32 2 are 64 128 तो ये ले सिक्का रहो इसके करो कैलकुलेशन ये चॉइस बना minus 3 2 7 6 8 to 3 2 7 6 7 गो ये नंबर है कोस के माइनस है कोस माइनस 1 पे जो तना हम एड कर तो प्लस 1 है को ये कटे ये के साथ हम स्टोर करेक्ट ओके गो साइज अनसाइनेड साइनेड खतरे अगर साइज जैसा हम तन को चाहिए फॉर्मूलास करने अप्लाई तो अगर ऐसे साइनेड खतरे से फॉर्मूला करें ये ऐसा ये अप्लाई ये करें तो तेल चर्ची करें तो अनसाइनेड खतरे से पॉजिटिव वन सो गो यस एम नोट फॉर्मूला हो उससे वो कौन से डाटा टाइप एम सी तक है ये वो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीजर्स दोयमिस डाटा टाइप अनुक छु सुचासी कैरेक्टर डेटा टाइप इसमें वो इस कैरेक्टर छु कैरेक्टर डेटा टाइप छु सु डाटा टाइप या फिर जस्ट कैरेक्टर्स करान इस्तेमाल फॉर एग्जांपल ए बी सी डी या इसलिए को फकौट के ब्रैकेट छु इच कैरेक्टर का सन कॉमा छु कैरेक्टर फुल स्टॉप इच कॉमा के अंदर से सोवर एक सन कन्वर्ट इनटू बिट्स एंड 0 एंड 1 एंड तो अंदर छु ट्रांसलेशन कर पेवन कारण तो इसके इस तरह के कंपाइलर्स तो ये चीज रिप्रेजेंट करने खातिर यू से डेटा टाइप छु द डेटा टाइप which are used for present the characters letters special characters that data type is called a character data type तो इस character data type छु इसे करण denote by char इसके होस्ट करा इंटीजर char integer करा इंटीजर इस कारण से char से char this is char छु character data type तो after छु actually there are two categories of character signed character which is signed unsigned asan signed character care to unsigned care signed as well as unsigned तो ये सारे साइज शो इधर ये सारे की मन तो स्पेस कुछ अच्छी ऑक्युपाई करा जाय या रखना कंप्यूटर मेमोरी में सुच रखना है 8 बाइट जाय रखना कैरेक्टर डेटा टाइप ये रखना 8 बाइट जाय signed as well as unsigned. 8 byte of memory she occupy kara in the computer memory. That means ये साथ में लोग can care variable a. And मतलब ये गो मैंने खतरे या सी computer memory छे. असम जैसी जाए आई मैंने खतरे store करने. या फिर character छे त्राउन छे letters या alpha ना पाऊँ क्या छे त्राउन तो character type of data छे store करने तो 8 byte of memory छे मैंने खतरे में allocate गसान through this variable. Okay, go is one of you say space yes रखना character सुच रखना 8 byte of memory रखना है अंदर that means 8 bits क्या अच्छा पता 8 byte or 8 bits of memory are to be allocated by the memory manager for this key data type तो असम काम कुछ डाटा से स्टोर करा characters for example बकर a या सम का या बकर 1 की yon outra is character constant you say code समझ ये चीज करान का हम स्टोर कैरेक्टर में तो क्या कम जाए रखन तो एमसी अगर इंटीजर में करो उसी तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी गैस एमसी तो ये साइज है पूरा हको साइज एंड थिंग कैलकुलेट जो कि से साइन मींस बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव तो अच्छा सही फार्मूला यस माइनस इसके ब्रैकेट 2 raised to power n minus 1 to 2 raised to power n minus 1 minus 1 n minus 1 so go ये तो अगर करो कैलकुलेशन minus 2 goes to the n से odd bit number of bits minus goes 1 to 2 goes to the
n छ 8 bit minus goes 1 minus goes whole 1 so go minus 2 raised to power 7 to 2 raised to power 7 minus 1 this 2 raised to power 7 cover 2 to the 4 to the so 2 so go minus 1 to 8 to minus plus sorry 1 to 8 we goes back in minus 1 so go that implies minus 1 to 8 to 1 to 7 go minus 1 have was akat 8 pe 8 kri tas mus 8 sa number character chi hun aski as akat 8 to you see positive tim have akat 7 was tas mus store okay this is size calculation formula ये formula रोज यार तो ये कुछ डेटा टाइप का साइज पाने ओके तो ये का साइड खतर तो अनसाइंड खतर क्या कर अनसाइंड में पॉजिटिव नंबर्स अच्छा बिल्कुल यह फार्मूला 0 फैक्टर टू 2 raised to power n minus 1 2 raised to power n minus 1 minus 1 so go 2 raised to power n 2 raised to power n sorry 2 raised to power n which is so go 0 to 2 raised to power n 2 goes to the n catch 8 but क्या goes minus 1 so go 0 to 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 164 128 120 so goes to 122 to 255 so goes 256 minus 1 so goes 0 to 255 go ये नुक size use chu unsigned carry so it's 0 to 2 raised power 55 hope कि तया समझ एटनेस के साइज किस करान ये जी फार्मूला इस्तेमाल करो उस तक साइनेट करे तो अनसाइनेट के हकान से आराम सान एनुक ये साइज इजीली करे ओके तो ये गो ऑल अबाउट द कैरेक्टर डेटा टाइप ब्लॉक से डेटा टाइप सुचो सुचो float data type या floating point numbers floating point मतलब है तीन नंबर इनमें decimal notation आसे for example like 3.5 8.5 856.5 नम नंबर यम floating point ये real numbers आसन तीन खातिर data type ची यम नंबर है को store करित in the float data type आते से जाए आगो float तो double the long double track समझा double and long double there are three different categories subcategories of the floating point data type तो इस floating point data type छु after float या हम जैसे को float मतलब है गो उस सकान से आप में point वाले नंबर मगर रैकेट नंबर क्या अमी चीज साइज यूज अमी ऑक्युपाई चीज स्पेस ऑक्युपाई करान छु कंप्यूटर मेमोरी में इस करान 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी 4 bytes की मेमोरी का करा अलाउ के या सही ऑक्युपाई इन द कंप्यूटर मेमोरी तो यू सी डबल छु करान 8 bytes ऑफ मेमोरी तो यूस लॉन्ग डबल छु इस करान 10 bytes ऑफ मेमोरी अलाउ के गो अगर न बोर्ड का नंबर आस करान डेसिमल नंबर आस करान स्टोर तन खुद के लॉन्ग इस्तेमाल तन इस लाकुट आसम के बका डबल तो लाकुट आसम का नंबर का बका है गो एज पर रिक्वायरमेंट है बट डेटा टाइप पानु या सही ये करेक्ट ये डिफाइन तो दोनों ये फ्लोट साइनेट अनसाइनेट इथे कहीं डबल टू साइनेट एज वेल एज अनसाइनेट तो लॉन्ग डबल टू साइनेट एज वेल एज अनसाइनेट गो इसको दोनों किस्म लॉन्ग ती कर प्लस माइनस वाल तो या प्लस वाली पॉजिटिव या नेगेटिव तो दोशे किस्म तो बराबर सही साइनेट 4 बाइट कराना ऑक्युपाई स्पेस साइन यमुक 8 बाइट करान तो अनसाइनेट यमुक 8 दाख करान साइनेट तो अनसाइनेट साइज अगर अस करो बिल्कुल करियो तो यह फार्मूला इस्तेमाल यस में वोन थाने करियो तो ये क्या जो 4 बाइट्स गए 32 बिट्स 8 बाइट्स गए 8 बाइट्स गए 64 बिट्स
इतने कहीं 10 bytes गए 80 bits तो कूचा bit साइलेंट खतर फॉर्मूला यस में वो अनसाइलेंट खतर 0 to 2 raised to power n minus 1 ये फॉर्मूला से था याद अनसाइलेंट खतर तो साइलेंट खतर ये फॉर्मूला अनसाइलेंट ये अनसाइलेंट खतर अनसाइलेंट लेंथ अमिस क्या साइज अमिक लिखा अनसाइलेंट खतर फॉर्मूला minus 2 raised to power n minus 1 to 2 raised to power n minus 1 minus 1 go constant data type length size है कुछ करें sign unsigned code by using this formula and by n is the number of bits n go number of bits n go number of bits hope कि तैयार समझ कि data types in C क्या क्या fundamental data types in C तक double float integer character wide the last one is wide wide is also a inbuilt data type wide of inbuilt data type magar this wide it takes no space it is jai ratan it's only a placeholder wide is jai ratan इसके मतलब into ratan 2 byte jai या 4 byte characters ratan 8 byte jai double ratan 1 byte here float ratan 1 byte jai double ratan 8 byte jai long double ratan 10 byte jai मगर इस wide data type तो ये कहीं jai ratan no place only a placeholder it takes no space तो data type आसान wide कहीं या तो यम साथ इस कांटी वेरिएबल डिक्लेयर करो जरूरी वेरिएबल डिक्लेयर करने ब्रोट लिखो तमिक डाटा टाइप मगर अगर ऐसे वाइड ए लियो सह हाय एरर कंपाइलर तिकाज हेको डाटा टाइप एज अ वाइड डिक्लेयर करित क्या तिकाज यह जाई कह करान ऑक्युपाई हो कह स्पेस कह रटान ये तो दैट मीन नो स्पेस हैज बीन अलोकेटेड बाय द मेमोरी मैनेजर तो वक्त वाइड करान इस्तेमाल करान फंक्शन इस्तेमाल येतन कहीं रिटर्न करान तो तक करान या कहीं चीज पास करो तक करान वाइड इस्तेमाल होप कि तह आमुत डाटा टाइप्स इन सी समझ तो इंशाल्लाह ये साथ in next videos derived data types and user defined data types we will discuss it in next videos till next video bye see you take care